सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक और बहुत ही अहम तरीन मुलाकात आपकी कराते हैं। और जैसे आप जानते हैं, सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपके लिए अच्छे लोग स्क्रीन पर लेकर आता है और उनको इंट्रोड्यूस कराता है। नाज़रीन, बात हो रही थी आज एक मुलाकात की। डॉक्टर एजाज अहमद, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत ही मायनाज कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से है और उन्होंने अल्लामा इक़बाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अमेरिका का रुख किया। और जब अमेरिका आए तो इनके हाथ खाली थे। इनके वालिद ने इनको बहुत मेहनत से, बहुत ही मशक्क़त से इनको तालीम दिलाई और इन्होंने अपने वालिद का वो ख्वाब पूरा कर दिखाया कि एक दिन वो बहुत नाम पैदा करेंगे, अपने ख़ानदान का भी, अपने माँ बाप का भी और अपने उस कॉलेज का जिसने उनको तालीम दी। और आज जैसा कि मेरी उनसे बातचीत हुई, वो कहते हैं कि वक़ार, पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट दे एजुकेटेड अस इन अ वेरी लिटिल मनी। और हम ये मट्टी का जो कर्ज़ है हम अदा करेंगे। और वो चाह रहे हैं कि वो अपने गाँव जहाँ से उन्होंने जहाँ परवान चढ़े बड़े हुए, कि वो वहाँ पे एक हॉस्पिटल कायम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हर डॉक्टर ये बात सोच ले कि वो अपने शहर में एक क्लिनिक कायम करेगा तो पाकिस्तान से हेल्थ के इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं, उनका एक अर्जेंट केयर भी है ब्रुकलिन में, जो बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस अर्जेंट केयर है। इसके अलावा इनकी ओन फैसिलिटी है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, जो बहुत ही बिग क्लिनिक है, वो भी ब्रुकलिन ही में है इनकी, और मैं वहाँ गया था। इसके अलावा डॉक्टर साहब में बहुत सारी खुसूसियात हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत ही अच्छे गुलकार और सिंगर हैं और गुशी के नाम से वो पहचाने जाते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। और ये इनकी सेकंड वीडियो आ रही है, साइयों साइयाँ। इससे पहले सोनियो एक इनका गाना आपने देखा पिछले हफ्ते। आज हम पूरा गाना आपको दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत मज़े की हमने बातें की हैं और आप को आइए चलते हैं आपको प्रोग्राम के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आज ये पूरा प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड है डॉक्टर एजाज अहमद साहब को, क्योंकि ये बहुत हम्बल है, बहुत ही डिसेंट आदमी है और सफ़ीर पाकिस्तान ने ये रज़ा किया कि हमको पूरा आज आवर देंगे ताकि वो दिल खोल के आपसे बातें करें, दिल के अमराज के बारे में बात करें, दिल की पेचीदगी जो उसके बारे में बात करें। आइए आपके लिए चलते हैं आज के खुसूसी प्रोग्राम में। मुलाज़ा फरमाइए एक मुलाकात डॉक्टर एजाज अहमद साहब से। मुलाज़ा फरमाइए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Please join us for the largest South Asian Bridal Expo and Fashion Show at the DoubleTree Hotel, Ontario Airport, near Los Angeles, on Sunday, October 4th from 11 a.m. to 6 p.m. Please be there. ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. Shri Balaji Entertainment presents Rockstar Atif Aslam with the stunning Aditi Singh Sharma. Call 310-889-5158 201-805-9426.
डॉक्टर एजाज अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरांवाला से। इब्तदाई तालीम गाँव में हासिल की और फिर शहर का रुख किया ताकि वालिदैन की ख्वाब की ताबीर हासिल कर सकें और माँ बाप की दुआओं और नेक तमन्नाओं और अपनी अंतर काविशों से अमेरिका में एक आला मुकाम हासिल किया। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके लोग बाहर जाके दुनिया भर में खिदमत कर रहे हैं और अपने वतन का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। एजाज साहब से मुलाकात उनकी नई एल्बम के नए गाने से हुई और फिर बात आगे निकल गई। जहाँ का अखलाक, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा देखकर मैंने सोचा कि डॉक्टर एजाज साहब से तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। डॉक्टर एजाज अहमद जहाँ दिलों का इलाज करते हैं वहाँ अपने दिल का हाल गुनगुनाकर बताते हैं। फनकार इनमें पोशीदा था और वो जब तक पोशीदा रहा जब तक उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर ली और कोई आला मुकाम हासिल नहीं कर लिया। लेकिन अब फनकार बाहर आ चुका है और अब ये डॉक्टर एजाज अहमद से गूशी बन चुके हैं। गूशी इनका प्रोफेशनल नेम है। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर एजाज अहमद एक नहायत ही हमदर्द और नहायत ही मोहब्बत और प्यार करने वाले इंसान है। नहायत ही अच्छी फैमिली के साथ और नहायत ही खूबसूरत मकान में रिहायश पजीर है और चाहते हैं कि वो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे हार्ट क्लिनिक बनाएं जहाँ पे गरीबों का इलाज किया जाए और अपने मुल्क के शहर पंजाब के शहर गुजरांवाला में भी जहाँ इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की वहाँ भी एक अस्पताल बना के अपने कौम की खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, आइए मुलाकात कराता हूँ आपकी डॉक्टर एजाज अहमद साहब से। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक और अहम तरीन मुलाकात और बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात मैं करा रहा हूँ। मैं अपने शहर से बहुत दूर लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और इस रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और मेरे साथ डॉक्टर एजाज अहमद साहब मौजूद हैं जो बाय प्रोफेशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने जो है अपनी डिग्री हासिल की। गुजरांवाला के रहने वाले हैं और इनके वालिद भी मुंसलिक थे कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से और उनके वालिद की हमेशा ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर एजाज अहमद ने बड़ी मेहनत की, मशक्क़त की और उन्होंने अपने वालिद का ये ख्वाब पूरा कर दिखाया। पाकिस्तान से न्यूयॉर्क तक सफ़र कैसे गुजरा, कैसे तालीम हासिल की, कैसे अमेरिका पहुँचे, ये सब बातचीत करते हैं आज डॉक्टर एजाज अहमद साहब से। लेकिन डॉक्टर एजाज अहमद की एक और भी खुसूसियत है कि ये म्यूज़िक से भी बड़ा शगफ रखते हैं। इसके अलावा आपको चैरिटेबल प्रोजेक्ट भी करते हैं, अपना से भी मुंसलिक हैं, अपना की भी मदद भी करते हैं और हमेशा उनके साथ भी रहते हैं। सोशल लाइफ भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। तो एक तवील आज मुलाकात है, आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर एजाज अहमद साहब से। डॉक्टर एजाज अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप कब और कैसे अमेरिका पहुँचे? मैं 2001 के एंड पे अमेरिका आया। बेसिकली आई वाज अ डॉक्टर। आई ग्रेजुएटेड इन 2000 फ्रॉम अल्लामा इकबाल और वहाँ से फिर मैं आगा खां में गया इंटर्नशिप के लिए एंड आफ्टर दैट आई केम हियर। It was my passion to be a cardiologist. The whole idea was to come here and get training, first in internal medicine and then cardiology. So this journey started in end of 2001, beginning of 2002. देखो, कभी आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगे या आपका ख्वाब था जब आप स्कूल जाते थे तख्ती लेके और आपके वालिद या आपकी वालिदा कभी सोचती थी कि एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर बने? मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे ज़हन में तो नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन आई वाज मोर इन अदर फील्ड्स बट माय फादर हैड गाइडेड मी towards biology and towards medical profession. He was affiliated with a lot of doctors. He was working. तो उनका ये था कि डॉक्टर जो है वो बनना चाहिए and I think this was a right decision. उन्होंने फैसला किया मेरे लिए कि प्री मेडिकल चूज़ किया पाकिस्तान में. So that's how I ended up in the medical field. माशाल्लाह, definitely आपके father has a dream and you have also a dream to become a doctor and serve the nation. Or you went through the Allama Iqbal Medical College as you mentioned earlier. Yes. That's a very good college. I met a lot of
student from that college, those really doing pretty well in America. Uh, when did you plan to come to America, and why you have chosen to America? Why don't you go to Saudi Arabia or London or other country? That's a very interesting question. Actually, I was in medical school, second year or third year, when I saw some American, especially one cardiologist, Dr. Ishfaq, and I was very impressed. He was trained from Chicago, and I was impressed the way he used to teach us, and the way he knew cardiology. And I was impressed, and I decided that I want to go to America, and one day I want to be like him. And to treat patients. Patients would really get happy to listen to him, and when he was diagnosing and treating patients. So I think it was second year or third year at that time I decided that I will go to America and become a cardiologist. What first step you have taken to come to this great country? Most importantly, it was USMLE. आपको पता है वो exam जो है that was the hardest part, and it was it's called USMLE 1 and 2. So I scored. I think at that time it was one of the top scores. I scored 96, and it was really a boost for me. And once I passed USMLE with a very good score, then I said, and my family actually, everybody was encouraged that I can go. And there were not many resources, but they gathered everything. A lot of, I think, dedication, and I thank to my family the way they gathered all the resources to get together. A lot of people to have USMLE 1, 2, and 3. I passed all the exams. But these were major steps after medical school. So, you got a visa. That's right? Yes. Okay, and what are you feeling when you got the visa? Oh, it was the happiest feeling. I was very happy feeling that actually when I was getting ready to come here, I passed one exam and then 9/11 happened. So I said, most likely Oh my I'm God. not going to get visa. But somehow when I went for interview, and the lady was impressed and with my scores. She gave me visa. I was actually very lucky. Even post 9/11 I got visa. Embassy was closed actually those days, but somehow I got visa. It was pure luck, I guess. So That's really, really luck, and get away with the visa. But of course, that you got a good credit score and you're good. Have you ever served Pakistan, any hospital as a doctor? yes, after I graduated, I served sometime in Jinnah Hospital in Lahore, and then I served Navaja in Karachi. So I worked there Well, as a internal medicine doctor. as internal medicine doctor. Yes. I see. So, what date and what year you arrived in US? I think it was December 21st, 2001. I still remember I came here. Okay, what was the first step you have taken? When I came here, it was a hard life. I just came here and I didn't know anybody. So somebody actually picked me up. Later became friends from the airport, and I just started some odd jobs. Those days, first 6 months were very hard. I had to do many odd jobs here. So, when you arrived in America, somebody picked you up. So, where you residing? आपका घर कहाँ था? कहाँ रह रहे थे? क्या हुआ? That's an interesting story. So I met somebody in, I think, in library in Allama Iqbal Medical School when I was studying that. One of the doctor here, I met him, and is it possible? I don't know anybody. You are visiting. Can you pick me up, or somebody can pick me up from airport? So he actually picked me. I asked somebody else to pick me from airport. So unke saath hi, I think they were cab drivers, and I stayed with them. They got me some jobs in gas station and all those car wash. So, how much you earning? It was like $5-6 an hour.
So you make it and meat, food and everything. Yeah, it was hard. First 6 months that was like that, but then I was lucky, and because I had good scores, I got into residency. Oh, how soon you got the residence? It was, I think, after 6 months. I came here in December 2001, and in July 2002 I started residency. It was pretty Oh, fast. that's good. 6 That's good. months. And where you got the residency? It was Interfaith Medical Center. The Interfaith Medical Center. After that, I started research and my own practice. So basically, residency was for 3 years. 3 years. After that, what are your next step? I wanted to do cardiology fellowship, so I actually got into fellowship. It was another story that there was a problem with the hospital affiliation, another hospital downstate. So I got into fellowship, but then the hospital pact got some problem with them, with the two hospitals. So I did not have fellowship. So I started my own internal medicine practice. I got very good friends. They're still my friends. They actually helped me, guided me to start internal medicine, and I started that and continued while I was doing research and doing cardiology and training here and there. It was a very hard time, 4 years. Finally, I got into fellowship in 2009, and then I did my fellowship. Fellowship. So you started working with some hospital as a cardiologist. So when I finished my residency, I started working in internal medicine. That was in Oh, 2005. internal medicine. Internal medicine, and then I did research in cardiac MRI. So I'm one of the, I think, few beginners who started. There was only one cardiac MRI machine in Brooklyn, in New York Methodist Hospital. That's where I started cardiac MRI research. So I did 3 years of cardiac MRI and research. Oh. And What do you mean by cardiac MRI? Nuclear medicine? cardiac MRI is a different technology. It's different from nuclear medicine. Nuclear medicine is mostly, which I'm doing right now, that is looking at coronary artery myocardial perfusion. But लेकिन जो cardiac MRI है, that is different thing. That was something new which had started 10 to 15 years before. It looks at the myocardium, muscle of the heart, and the valves. Check muscle of the heart? Muscle of the heart and the valves and also vascular structures. So that's a totally different field. So You have expertise in that? Yes. I have advanced training in cardiac MRI because I've worked 3 years in that, and then I got into cardiology fellowship. So how many practice you doing? How many location you have? I have my main cardiology office, then I have affiliated three offices, plus I have one urgent care. So total I have 4 locations. So how many employees working for you? I think it must be 30 to 50 people. Working with you. Yeah. So how's your this operation is going? Is smooth? Yeah, thank God, it's very smooth. It's working good. I have a very good, family support. My family members, my brother and 2 of my brother-in-laws, they actually help me with a lot of things, accounting, billing, and overseeing everything. So it's very nice. It's operational. So being a Muslim, being in the brown color accent, what's the feeling of your patient, which is definitely predominantly white and blacks and Latinos? Honestly, I never felt anything so far. I have heard a lot, but I never felt any discrimination or any. I think I have been treated fairly. Maybe I didn't get exposure or whatever, but I have been treated fairly, and I treat patients fairly too. And I love my patients, and I think they do the same. You never had any issues, any feeling in your heart that these people look at me at a different angle? Honestly, no. I got so much respect, which is I cannot even explain. That people give me respect, and my patients are very happy, and I feel very connected with them. I see. Okay. How many patients do you see? Probably your whole system. So we
We have multiple locations, multiple offices. So the number varies 30 to 50 to 100 based on different offices, opening hours. So it's a quite busy practice. So what is the name of your facility? My office is Park Slope Cardiac and Diagnostic Centers. Park Slope Cardiac and Diagnostic Center. And then I have urgent care, which is first response urgent care. That's very good. And then I have other locations which have medical offices there, respective names. Definitely. So how many doctors working for you? So it's like a team of doctors. We work together. Total 6 doctors plus NPs and PAs, probably around total 11 providers. All 11. So that's what is your goal? Actually, you know that I heard that Obama is adding 50 million more patients. So do you think Obamacare is doing pretty well? You think is support your business? The thing is, I think Obama maybe, from his heart, he tried his best. Maybe he's I don't doubt his intentions that he tried to give insurance to everybody, but the system I don't think is working the way this Obamacare is being implemented. I see patients coming to me, they have a new insurance and they sit there. When we tell them that we just check your eligibility and you have to pay deductible, which is $5,000 or $8,000, so they say that we just got insurance, so how can we see a doctor? So the insurance says that they have deductible. So first they have to pay $5,000, then they can see doctor. Or the other kind of patients, sometimes patients would come and they say that we got insurance, can we see the doctor? And I say I don't participate in this plan. So we call the insurance and we say, can we participate because there is a patient here? And they say, oh, this panel is closed. So, so I don't know. I really don't think it's working the way it is set up. So either patients don't have access to doctors unless something serious happens, they go to emergency room. But mostly the way the insurances are set up, I don't think it's working. So that's the main issue. Either patients have insurance, but they cannot see a doctor because doctors don't participate. I see. So it's not fit for your system, Obamacare. We're still getting patients more than before, but I think a lot of people who have insurance and new insurances, they don't have access to doctor. Oh, I see. Okay. Now, back to you from Pakistan. You graduated from Pakistan. How much money you did really invested to become a doctor in Pakistan, honestly? I am lucky. I think there was a very good system. Allama Iqbal Medical College, where I studied, was probably 10 to 20,000 rupees a year fee. So this was not much in that system. And you get $200, $300 per month. Something like that. Yes. So how many years? 5 years. The total, let's say you become a $1,500, $2,000, you become a doctor. Something like that, yes. Have you ever tried to pay back your country, what you earned from my beloved country? Yes, I do actually. On a regular basis, every month I try to do my best. I have a lot of donations. I have a lot of people who I support them. And also I'm planning to build a hospital in the area where I came from. नाज़रीन, तो आइए चलते हैं अब इनकी फैसिलिटी और देखते हैं कि कैसा इनका हॉस्पिटल क्लिनिक है और इनका अर्जेंट केयर सेंटर कैसा है, इनका कार्डियोलॉजी का जो फैसिलिटी वो कैसी है। मुलाकात कराते हैं आपकी, आइए चलते हैं, आप भी देखें और हम भी देखेंगे। बिन तेरे
डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से सुनाएं, हैं आप? आप सुनाएं कैसे हैं? ज़बरदस्त माशाल्लाह। देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखते हैं, जी ठीक है, और आपकी जो सिंगिंग है माशाल्लाह वो एक नया जो है एंगल देगी डॉक्टर्स को कि भाई मरीज़ों का इलाज कराने के साथ साथ आप अपने शौक़ भी रखें, उनको भी परवान चढ़ाएं। जी ठीक है, अब ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतने साल से अमेरिका में आए हैं। जी ये अमेरिका आप देख रहे हैं, पूरा अमेरिका यहाँ पे जी हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपने कभी फीलिंग की कि यू आर डीलिंग विद डिफरेंटली, और जो है लोग हैं आपको डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं, या आपको समझते हैं कि जी आप पाकिस्तान से आए हैं और आप यहाँ के नहीं हैं? कभी आपने ऐसा सोचा, कभी किसी अमेरिकन ने आपके बारे में? ऑनेस्टली थिंकिंग मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट है। आई थिंक आई हैव बिन वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू do the right things for my patients and other people. We have connections with political people, we have connection with social welfare and everybody. I don't think I ever felt that I have been treated unfairly or differently. I think I gave a good treatment and I got a good treatment. So फॉक सॉन्ग लेके आए आप सेकंड नंबर का, वो ज़बरदस्त है। thank you जी, thank you. तो फ्यूचर में क्या प्लान आपका, कहाँ जाना चाहते हैं म्यूज़िक की दुनिया में आप? ये तो मैं शौक़ के लिए करता हूँ जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लिमिट है कि ज़्यादा या कम। शौक़ के लिए मैं करता हूँ और जो भी मैं कर सकूँगा अपने टाइम में, बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू वर्किंग एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। वो काम मैं जो है ना वो ज़्यादा करना चाहता हूँ और वो कर रहा हूँ। एंड आई हैव अ फैमिली लाइफ, आई वांट टू कंटिन्यू दैट एंड आई वांट टू डू अदर थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग करंटली। तो सिंगिंग में देयर इज़ नो एम्बिशंस के ये करना है वो करना है, जस्ट सिंस आई वांटेड टू डू एक इट। बात यह है कि हार्ट के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका आप सोच रहे हैं कि उसका हल तलाश किया जाए या उसका कोई ट्रीटमेंट तलाश किया जाए, जैसे हार्ट के मसल्स का इश्यूज़ होता है? Bilkul, we were just talking to you earlier. One of our prominent, person from Pakistan, like you mentioned. Hina Chaudhary. Yeah, she is involved in regenerative therapy. Once the myocardium is dead, heart muscles जो हैं वो dead हैं. I think this is a remarkable thing if somebody can come from Pakistan, well, like she did. And so far all the trials are in very primitive phases, that if we can regenerate cardiac muscles or DNA therapy. Your expertise in nuclear. तो nuclear क्या करती है? Nuclear medicine, basically this is for the coronary artery disease, screening of coronary artery disease. If there is a blockages of coronaries, तो उसके लिए हम जो है वो stress test करते हैं nuclear medicine का. It also tells the heart function, how the heart pumping function is. But that's not very reliable. But mostly we are doing it for screening of coronary artery disease. It's not 100% accurate, but it has 80 to 85% sensitivity. Okay. So that is a reliable, I think one of the most available most available test. तो आपको एक पुराना गाना वो रफ़ी का हमें बताएं, थोड़ा गुनगुना के बताएं। हाँ जी, पहले मैं मेडिकल स्कूल में था तो there was one song I used to sing a lot. मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान,
पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान अमेरिका में जीवे पाकिस्तान बी अमेरिकन बी पाकिस्तानी बी प्राउड अमेरिकन बी प्राउड पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान देखिए जी दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डॉक्टर साहब अब से 15-20 साल पहले यहाँ पे आए थे और गैस स्टेशन पे काम करते थे और गैस स्टेशन पे काम करते करते आज इनकी कार्डियक फैसिलिटी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब तो ये माशाल्लाह आपका ऑफिस है जी। तो कितने अरसे से इस ऑफिस से आप ऑपरेट कर रहे हैं? इस ऑफिस में मैं so far is 3 years, more than 3 years I am in this office. तो यू ओन दिस ऑफिस और यू रेंट दिस ऑफिस? I own this office. Yeah, this is. माशाल्लाह। कितने फ्लोर में है, कितने स्क्वायर एरिया ये? This is around 3,000 square feet. This is my office, and then there is patient waiting area. Then there are patient exam rooms. Then there is a nuclear lab in the back. We do nuclear stress tests, and also we do the vascular testing, echocardiograms, as you can see here. Oh, yeah, yeah. This is an echocardiogram that if that's being done here, I interpret here, and also we do the nuclear stress test. डॉक्टर साहब कभी आपने सोचा था जब आप इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज में थे तो क्या आप कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे और आप न्यूयॉर्क जाएंगे? That was my dream. I was inspired by one of the cardiologists who was trained here that I wanted to go to America and become a cardiologist. But I never thought that, you know, this is such a big, very nice land of opportunity that I can grow this much. So as I worked hard and I got, you know, feedback, and it was very encouraging every day to grow further and further. पहले तो नहीं सोचा था कि इतना कुछ होएगा. अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप आए थे 19 I came in 2001 actually, end of 2001. तो it's not that long. Yeah, it's like around 13-14 years. 13-14 years में जो आपका pace है growth का, it is really amazing. Gee, thank God. I think that's what the probably learning point is, that if you work hard in America, this land gives you opportunity if you work hard. And there are, of course, there are competitions, there are hurdles, but you can definitely pass them with your work, with your hard work. So you deal with all the insurance groups, medical, Medicaid, and Yeah, I think private insurance. probably almost all the insurances. This area is Park Slope area of Brooklyn. So we have a mix of commercial and Medicare insurances, some Medicaid also. अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपसे काफ़ी बातें हुई हैं कि जनाब आप गुजरावाला से आए और आप अमेरिका में आके आबाद हुए और आपने तरक्की की माशाल्लाह। आपने काफ़ी सर्टिफिकेट लिए, काफ़ी अवार्ड्स लिए, बड़ी खुशी की बात है। आज क्योंकि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं और दिल का मर्ज एक ऐसा है कि हर आदमी बड़ा फ़िक्रमंद रहता है और कहा जाता है कि बम धमाकों से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो कार्डियक अरेस्ट है, That's true. जो है वो ज़ाया हो जाती है और आज इंसान चल बसता है। तो हमारे नाज़रीन को कुछ आज अच्छी सी एडवाइस दें दिल के बारे में। I think if I have to give one advice to somebody, so that will be cholesterol and diabetes control. So if you have a marker, everybody can check, you know, hemoglobin A1C, which is screening test for diabetes. So if you can keep that less than 6 or 5, or keep a target around that, so that is one thing. And other thing I would say that work on cholesterol. Most important is LDL. So if you can keep that as low as possible, if they say LDL is less than 50 or 40, there's no atherosclerosis. That's #1 killer in all, probably in America, and now most of the deaths in Pakistan too.
So if you focus on these two things, I think, of course, blood pressure and other things are there too. But I think if you ask me one or two things that I would definitely focus on these: hemoglobin A1C, bring it down as much as possible, and LDL as much as possible. If you have to do it with medications, if you have to do it with the diet, of course, diet is the first step, but most of the time we don't succeed in this. So if you keep these two things under control with high blood pressure, it's definitely, I think, you will see the difference. And this, again, I spoke to you earlier, this is like a preventive medicine. So more of preventive cardiology as compared to doing more medications or more devices. I don't advocate more of that. Of course, if you are at advanced stage, you will need that. But I think preventive medicine, preventive cardiology is the main way to go. Okay, what about the exercise and about the food habits? So the goal, if you see how to get to low A1C and low LDL, you will have to choose different ways. One of them is diet and that is exercise. Exercise helps, but overall, exercise keeps your coronaries and whole body circulation patent. It works good, but it's not very helpful with losing weight. So I would say that continue the exercise program and dietary program, and if you need a medication to get to those goals. So they are how you get to those goals of low hemoglobin A1C and low LDL. You will have to do either diet, exercise, or medications. So these are three ways to go about it. This is some other painkiller medicine like Tylenol, like aspirin, like Bayer's aspirin, or is there any role? So these are two different things. One is aspirin. If you spoke about aspirin, aspirin has a role in cardiovascular disease prevention of and not only prevention but also in some kind of treatment in atherosclerosis. It acts as antiplatelet medication. Platelets are responsible to make plaque and lead to worsening of atherosclerosis. So low-dose aspirin is advised for especially people who have risk factors or CAD. So we talk about primary prevention and secondary prevention. Secondary is if somebody already has a disease, for example, stroke or heart attack, definitely there is a role of secondary prevention of low-dose aspirin, which is Bayer aspirin, as you said, 81 milligram. But in primary prevention, it is really controversial. There is no real clear-cut guidelines that you should be taking Bayer aspirin if you don't have any event. Of course, it depends on the doctors. If your doctor is seeing that you have multiple risk factors, diabetes, cholesterol, sedentary lifestyle, so it may have a role, plus age, plus family history. Regarding Tylenol, that does not have any protective effect at all. So it's for painkiller. If you compare other painkillers like naproxen or ibuprofen to Tylenol, Tylenol is relatively safe because it does not have effects on gastric mucosa and stomach. I see. So Tylenol is safe, but if you have a liver issue, Tylenol, you have to be careful. Very careful. Dr. ये heart transplantation, the heart transplant, how successful this? It's been successful, actually. The problem is the donors. There are so many people, they are on the list. I have some patients who are on the waiting list. So they are on the bridging therapy on LVAD, that's a cyst device. But the donors are not there. So it is a successful treatment. It is working good. But the thing is, we don't have many donors. A lot of people are waiting for the heart transplant. They are on the list. And the artificial heart is not working? Artificial is there too, but it's very early stage. It's a very limited success. Very limited success. So how those patients survive, which is they're waiting for the heart? You put some kind of bag or medicine? So they have a left ventricle assist device. That is a device which helps to pump
the heart. If the heart is not pumping, if the heart is supposed to function like this, is pumping like this, very weak. So that is like assist device. It helps to assist. So, What is that called? It's called left ventricle assist device. The problem with devices are that these are something out from the outside. We do surgery to put in, and they get infected. They get infected. So once they get infected, that is a problem. Then you have to give antibiotic. The multiple admissions of the hospital. So that is all of this is destination therapy towards end. So Is there any medicine which is pump or something to the heart? there is no medication. What we generally give, ACE inhibitor and beta blocker, the pills what we generally give, they help to bring the heart function back to normal. Okay. Mostly we see success. Actually, they have been very successful. और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे जो आपने आज बताया है डिटेल में, क्योंकि हमेशा जनरल हम बातें करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम कुछ आपके प्रोफेशन के बारे में बात करें. जी, no ठीक है? problem. तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह. Thank you very much, जी. ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. Shri Balaji Entertainment presents Rockstar Atif Aslam with the stunning Aditi Singh Sharma. Call 310-889-5158 201-805-9426. Please join us for the largest South Asian Bridal Expo and Fashion Show at the DoubleTree Hotel, Ontario Airport, near Los Angeles, on Sunday, October 4th from 11 a.m. to 6 p.m. Please be there. नाज़रीन, जाने से पहले एक बार फिर 27 सितंबर को हिलरी क्लिंटन डॉक्टर आसिफ चौधरी घर पे तशरीफ़ ला रही है, और यह दूसरा मौका है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पाकिस्तानी कम्युनिटी में पाकिस्तानियों के घर में आ रहा है. तो आप इसको सपोर्ट करें, कामयाब बनाएं, ताकि अगर हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बनती हैं तो आपको हमारा उसमें हिस्सा होगा और हम उनसे बहुत सी बातें मनवा सकते हैं. और ये वक्त आ गया है कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. नाज़रीन, नेक्स्ट वीक हम लेके आ रहे हैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और ये तमाम उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका ताल्लुक हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, मेडिकल से, हॉस्पिटल ओन करते हैं. डॉक्टर खालिद कालून जो है वो दी एक्सपर्ट है टू फाइट एंड डिफेंड द मेडिकल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एंड ही इज आल्सो एक्सपर्ट इन द कंप्लाइंस कि हाउ टू फेस द कंप्लाइंस, हाउ टू फुलफिल द कंप्लाइंस ऑफ द हॉस्पिटल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री. खालिद कालून साहब की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, सेम चैनल, सेम लोकेशन, भूलिए नहीं. इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार अली खान आपसे जा जाएगा. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद.